My next contestant is Sachin. Okay. Now children, all of you are playing called Vanilla Intelligent. I think that all of you are aware about these questions. Right now, Sachin Kumar with us. Well done, Sachin. Right now, Sachin Kumar. The name is Sachin Kumar or Sachin Tendulkar? Sachin Atlas, thank God. Otherwise, I was thinking that Sachin Tendulkar is on the hot seat. Yes, the name of Sachin, definitely it has a weight. हमारे साथ सचिन कुमार हैं, क्लास 8 के स्टूडेंट from MANGLAM International School, and he is doing very well. And right now, tell me some experience, Sachin. It was an expectation that you will come on the hot seat. क्या आपकी कोई expectation थी कि आप hot seat पे आएंगे? Yes, sir. And definitely you are expecting. Okay, thank you very much. If you think that you will come, definitely you will come. That is your expectation. If you want to share some experience with us, you can share. कुछ आप share करना चाहते हैं? हाँ, सुनाइए. I like subject science. Science. Very good. In science, especially in physics, chemistry and bio. This chemistry, very good. Because I think that all the materials is made of chemistry. Yes. All the जितने भी materials हैं सब कुछ chemistry की ही देन है. I learned 20 elements on the line. Yes, definitely you have learned 20 elements with the atomic numbers. Yes, sir. Okay. So you can just count them. If you are knowing this 20, so definitely I think that all the audience they want to listen, they are eager to listen. Hydrogen, Yes. helium, lithium, barium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, chlorine, argon, potassium, calcium. Very good. I think that carbon. What is the atomic number of carbon? Carbon का atomic number क्या है? You are knowing about this? Because when you are studying about element, you should know that what is the atomic number and atomic weight. So definitely next time when you will come on the hot seat, then you will prepare about the atomic number and atomic weight. And anything if you want like poem or anything. No, sir, I ask one question. Yes, Steph. Who is the chairman of CBSE? CBSE chairman. CBSE chairman is Pradyuman right now. And right now she is heading that. And whenever you have doubt of any question, you have internet facilities, you can check it also. Anything, if you have any doubt. So Sachin, tell me that if you want to recite any poem. No, sir. कोई poem हम सुनाना चाहते हैं हम लोग को? I prepare one thought. Okay, tell. Share with us. As you sow, so you reap. Yes, definitely. Your karmas will never forgive you. जो आप कर्म करते हैं वो आपको कभी छोड़ेंगे नहीं. They will follow you. And one day you are going to cut the fruits of your karmas. एक दिन आपको अपने कर्मास के फ्रूट जो है काटने पड़ते. So definitely I am agree with you. तो हमारे साथ हॉट सीट पे हैं सचिन कुमार of class 8 belong to MANGLAM International School. And right now the computer वहाँ से क्या situations हैं? If you are ready, then we can start our questions. Computer जी ready है तो हम लोग questions शुरू करें. Now my next question is, which of the following which of the following disease is caused by the bite of mad dog? Option A, hydrocele, option B, malaria, option C, hydrophobia, and option D, tuberculosis. इनमें से कौन सी बीमारी पागल कुत्ते के काटने से होती है? हाइड्रोसेल, A, B, malaria, C, hydrophobia, and D, tuberculosis. Your time starts now.
Sachin, have you any idea about this? कोई ऐसा इंसिडेंस आपके लाइफ में किसी के साथ हुआ हो? सर मैट डॉग। मैट डॉग। कभी पढ़ा है इसके बारे में कुछ आपने? No. Okay. I want to use expert advice. You want to use? Yes. Time stops now. Right now, Sachin wants to use expert advice. And right now, my expert is Preeti Keshri. And the question goes to Preeti Keshri. Which are the following diseases caused by the bite of mad dog? A. Hydrocele, B. Malaria, C. Hydrophobia, and D. Tuberculosis. Right now, the voice of expert. I think that option C. Hydrophobia. Option C. Thank you, madam. Thanks for expert advice. Right now, the expert advice given that hydrophobia is the right answer. Are you going to go with experts? Yes, sir. Yes, Kapil Masai. Experts का जाना चाहेंगे. Option C. तो लॉक किया जाए. और सचिन ये आपका है सही जवाब. Well done. Give thanks to from Sachin's side. I want to give thanks to the experts who supported Sachin. Have you decided कभी आपने सोचा कि सचिन नाम आपका क्यों रखेंगे? Why the name is kept Sachin? Sachin Tendulkar से inspired होकर रखा गया है? Yes. Okay, very good. The name has weight. A bad name is better than a bad man. Which of the following Hindu cities have houses with doors on the main street? A. Lothal, B. Sukrota, C. Chanmara, and D. Bonavali. इनमें से कौन सा जो हिंदू सिविलाइजेशन थी और बाकी जो सभ्यता थी हिंदू सिटीज हैज हाउसेस विद डोर्स ऑन द मेन स्ट्रीट, दरवाजे होते थे उनके मेन स्ट्रीट पे? ए. लोथल, बी. सुरकोटटा, सी. चरमुदरा, एंड डी. बोनावली. Not showing on my screen. Question option. क्या चल रहा है? Running in your mind, Sachin. क्या चल रहा है आपके माइंड में? Option A, what I want to use. ऑप्शन ए आपको लगता है सही है, मगर आप कंफ्यूजन है. यू आर नॉट श्योर अबाउट द पिक्चर. ओके, यू वांट टू यूज लाइफलाइन? Audience poll. Right now the question goes in the audience. I'm asking the question for the audience. Which of the following Hindu cities have houses with doors on the main street? A. Lothal, B. Surkota, C. Chanmudara, and D. Bonavali. Lothal. The audience says that option A correct. वो option आप ही के साथ audience देंगे. What do you think? You want to go with the audience? कंप्यूटर मास्टर ऑप्शन ए को लॉक किया जाए. और सचिन ये है सही जवाब. हमारे साथ हॉट सीट पे सचिन खेल रहे हैं. और 2 प्रश्नों का जवाब दिया है, लाइफलाइन का यूज किया है. एक्सपर्ट एडवाइस एंड ऑडियंस पोल टू लाइफलाइन ही यूज्ड. एंड माय थर्ड क्वेश्चन is on the screen is which is the first country to print book? Option A China, option B India, option C USA, and option D UK. कौन सा देश सबसे पहले बुक को प्रिंट किया था? चाइना, भारत, यूएसए या यूके? Your time starts now. China. Are you sure? Confident? लॉक किया जाए. कंप्यूटर मास्टर है, ऑप्शन ए को लॉक किया जाए. और ये है सही जवाब. You are so confident about this question. After this book, yes, knowledge empowers you and gives you the right place for a deserving candidate. My next question from Sachin Kumar is: which
Which was the first country to launch artificial satellite in the space? Option A, Russia. Option B, India. Option C, USA. And option D, UK. इनमें से सबसे पहले कृत्रिम उपग्रह किसने अंतरिक्ष में छोड़ा था? रूस, भारत, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन? Your time starts now. क्या चल रहा है सचिन आपके माइंड में? You have an idea about this question? रसिया रशिया कुछ राइट है? किस बेसिस पे आप रशिया का नाम शो? क्यों? कुछ क्या रीजन है इसके पीछे? You know about? Confident? लॉक कर दिया जाए? ओके, कंप्यूटर मास है, ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। अगर आपने यूके जवाब दिया होता तो ये आपका जवाब गलत होता। If you have choose USA, then it was the wrong answer. If you have used India, then it was also wrong answer. The right answer is Russia. Armstrong और एल्ड्रिन दोनों जो है स्पेस पे गए थे। A. Mohammad Azharuddin, B. Sachin Tendulkar, C. Gele and D. Virat Kohli. सबसे पहले बैट्समैन कौन थे जिन्होंने 3 टेस्ट सेंचुरीज में सक्सेसिव माने क्रमशः टेस्ट डिबट किया? A. Mohammad Azharuddin, B. Sachin Tendulkar, C. Gele and D. Virat Kohli. Your time starts now. What is running in your mind? Sachin, then your name is Sachin also. Sachin, because you want to use lifeline. You have used expert advice. You have used audience poll. Flip of the question you can use. तो change कर दिया question? Okay, अगर question change है, अगर आपको बताना होता तो क्या हो? ये गलत जवाब था सचिन। You have taken right. This is the right answer is Mohammad Azharuddin. This is the right answer, Mohammad Azharuddin. आपने सही समय पे सही डिसीजन दिया। If you take right decision on right time, then you are the winner. My next question is, what is the speed of the Earth around the Sun? Option A, 45 km per second. Option B, 35 km per second. Option C, 30 km per second. And option D, 25 km per second. Earth के around, what is the speed of the Earth? पृथ्वी की गति सन के around सूरज की चारों तरफ क्या है? 45 km per second, 35 km per second, 30 km per second या 25 km per second. Your time starts now. 30 किलोमीटर पर सेकंड। Are you sure? Sachin? Confident? नहीं पढ़ा है आपने? कंप्यूटर नाम से ऑप्शन सी को लॉक किया है। सचिन आप बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन ऑप्शन सी सही जवाब है। Sachin is playing very well. He has taken right decision at the right time. और yes, 30 km per second की स्पीड होगी। और अच्छा खेला। Sachin, do you want to share something with us? Share करना चाहते हैं कुछ अपने बारे में? So all the contestants are waiting. They are eager to know about you. If you want to share some quality moment of your life, Yes, sir. yes, share. After 10th, I am going to prepare for IIT. Very good. And your brother, how many brothers you are having? 2 brothers. Okay, one brother. One brother is IITian in Bangalore. Very good. It's a big round of applause for his brother. He is the IT from Bangalore.
and definitely that decision was correct, the right person on the right chair. IT Bangalore, most probably in the next, you are going to crack the IT examination. It's I think that's the toughest examination of India, not India, you can say in the world also, because from IIT and from Ahmedabad also, IIM, all the green students, they used to go from out of the country, abroad. Right now, my next question from Sachin is, insects that can transmit disease to human are referred to as A. Carriers, B. Reservoirs, C. Vectors, and D. Incubators. कौन सा इंसेक्ट जो है ट्रांसमिट करता है डिसीज को ह्यूमन से रेफर करते हैं? Carriers, reservoirs, vectors, and incubators. Your time starts now. I want to use lifeline. You want to use lifeline? Okay. You can use your lifeline, flip up the question, because already you have used expert advice, audience poll, one lifeline. अच्छा, अगर आपको देना होता हो कि I am using life, exchanging the question, which option was correct? Carrier. Carrier. It was wrong answer, Sachin. You have taken right decision. The right option was vectors. The right option was vectors. कंप्यूटर से फ्लिप किया जाए, क्वेश्चन को एक्सचेंज किया जाए, सचिन को दूसरा क्वेश्चन दिया जाए. Maybe God से pray करिए easy question हो, you can handle this question easily. And I hope that you are good in mathematics as you have told me already. So maybe you can solve this question. My next question is, 0 divided by 0 is equal to, option A is 1, option B 0, option C not defined, and option D is defined. 0 को अगर 0 से divide करें तो आएगा 1 0 not defined या defined. Your time starts now. What's running in your mind? Sachin, tell me. Have you gone through such type of question? Yes, sir. Because generally we divide by the numbers, but here you have to divide 0 by 0. If you have to crack the IIT examination, I think that's an interesting question for you. And the Ramadan asked the question, this question from his teacher. Jack, what is running in your mind? Time is limited. Take criticism. Option C. Option C, not defined. Are you sure? Yes, sir. लॉक कर दिया जाए? Yes, sir. कंप्यूटर मास है, ऑप्शन सी को लॉक किया जाए. और सचिन आप बहुत अच्छा खेल रहे थे, अब आप और अच्छा खेल रहे हैं. It is not defined. Zero divided by zero. It is not defined. Not any particular answer. You are playing very beautifully. So already you have idea what it was the case. आपको आइडिया था कि ये कैसे किया? So I want to take time. Okay, you want to take time. Okay, it's okay. So I think that it's a very good question. रामानुजम ने अपने क्लास 3rd में अपने टीचर से ये क्वेश्चन पूछा था. The teacher was explaining that 3 divided by 3 is 1, 5 divided by 5 is 1. He asked the question that what 0 divided by 0, and I think that he was not satisfied this time because the teacher was primary teacher and he was not satisfied with the answer of the teacher. Okay, now next question from Sachin. Sachin hot seat पे हैं, very beautifully he is playing. And what are the number of questions he attempted? 6. There are 6 questions आपने attempt कर लिया है. That is good. Congratulations to you. And wonderfully you are playing. My next question from Sachin is, how many zeros are in trillion? Option A 6, option B 6, says 8, option C 7, and option D 12. ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं? Option D.
ऑप्शन डी 12। Ayush, आप जानते हैं इसके बारे में? ट्रिलियन। Ayush, कॉन्फिडेंट? क्योंकि एक बार लॉक करने के बाद चेंज नहीं कर सकते। Are you confident? कंप्यूटर मां से सचिन कॉन्फिडेंट है, लॉक किया जाए। ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। और सचिन, yes, and this is the right answer. Trillion में because million, billion and trillion, 6, 9 and 12. So that is 12 zeros in trillion. And Sachin, really I think that you will crack IT examination. Your brother is also studying in IT. In which IT you have told? It was in Kanpur? Roorkee. Roorkee. Okay, that's good. Okay. I think that you will also crack the examination. Okay, my next question from Sachin is, who is the inventor of www? Option A, it is a computer I am asking. Option A, Bill Gates. Option B, Tim Berners-Lee. C, Tim Benjamin. And D, none of these. Your time starts now. सुना है क्वेश्चन कभी? कंप्यूटर में अक्सर यूज करते हैं www डॉट। Who is the inventor? हमारे साथ हॉट सीट पे सचिन है, he is playing very well. क्या चल रहा है? What is running in your mind? Sachin, can I know? If I'm not disturbing you, let me know that what is running in your mind. Option B, Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee. या आपने नहीं पढ़ा है या it was your guessing? लॉक कर दिया है? Yes. कंप्यूटर मां से ऑप्शन बी को लॉक किया गया। सचिन आप अच्छा खेल रहे थे, the right answer is Tim Berners-Lee. Yes, it's the right answer. Never happened without effort. लक भी उसी का साथ देता है जो प्रयास करता है। And Tim Berners-Lee is the right answer. You are playing very good. Question is correct. You have given the right answer. आप बिल गेट्स के बारे में कुछ जानते हैं? Yes. You want to share something? Bill Gates. Which company is Microsoft? माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है। विंडोज लाने वाले बिल गेट्स थे। Yes. एंड बिल गेट्स, फॉर इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू, बिल गेट्स एंड स्टीव जॉब्स दोनों एक दूसरे को जानते थे, बोथ वर फ्रेंड्स। और स्टीव जॉब के अंडर में बिल गेट्स ने विंडो पे काम किया। 70-80% जब हो गया विंडो पे काम, then after this Steve Jobs came to awareness. Steve Jobs and Bill Gates both for a meditation, and Steve Jobs continued here and Bill Gates returned to his own city. And then after this Bill Gates launched window and he has become billionaire. And when Steve Jobs returned, then उसके बाद जब हो गया तो उसने पूछा बिल गेट्स से कि yes you have launched? Yes, I launched. And after this Steve Jobs ने डिज्नीलैंड, एप्पल का जो कंप्यूटर है सबसे हाई रेवेन्यू देता है। एप्पल का अगर कंप्यूटर या मोबाइल कोई भी आप करते थे, इससे अमेरिकन रेवेन्यू को फायदा होता है। They get the advantage of this. Yes, it's very Bill Gates. You are knowing about this. That's good thing. My next question from Sachin is, during processing data programs and process informations are held temporarily in A. secondary, B. ROM, C. RAM and D. CPU. Processing data के दौरान प्रोग्राम प्रोसेस किए जाते हैं, informations held temporarily माने अस्थायी रूप से किए जाते हैं। Secondary, ROM, RAM या CPU, central processing unit. Your time starts now.
What's running in your mind, Sachin? Tell. You have an idea about this question? You have used flip of the question, audience poll, expert advice you have taken. So all the three you have taken. And how many questions did he attain? 8 questions. 2 questions you are far from the. You will use 2 questions, then you can use the 50-50 options. Here you cannot use lifeline. After you have used expert advice, you have used audience poll. Flip of the question also you have used. Rank. Option C, rank. Are you sure? Confident? कंप्यूटर से ऑप्शन सी को लॉक किया गया। Sachin, you are playing very good. But right now, your answer is correct answer. Do you have an idea about brand? Can you have an idea? Okay, Sachin हमारे साथ hot seat पे है, he's playing 8 question attempt कर चुके हैं. All right now, the next question on the screen is Pathe Panchali is one of these directors' classic movies on even won an Oscar for lifetime achievement. Whom is this? A. Sanjay Leela Bhansali, B. N. Arun, C. Atul Gopal Krishna, and D. Satyajit Roy. Pathe Panchali के वन ऑफ दीज डायरेक्टर्स, इनमें से कौन से डायरेक्टर हैं जिन्होंने क्लासिक मूवीज किया, इवन वॉन एन ऑस्कर, जिसके लिए उनको ऑस्कर अवार्ड भी मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर अवार्ड। होम इज कौन से वो व्यक्ति हैं? संजय लीला भंसाली, एन अरुण, अतुल गोपाल कृष्णन या सत्यजीत राय। लाइफ टाइम स्टार्ट्स नाउ। You know about Pathe Panchali? It's a MANGLAM movie. सभी डायरेक्टर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, संजय लीला बंसाली एंड अतुल गोपाल कृष्ण और सत्यजीत रॉय। डायरेक्टर को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, ऑस्कर। Take decisions, Sachin. Right now, Option A. Satyajit Roy. Are you sure? Confident? Lock कर दिया है? कंप्यूटर में से ऑप्शन डी को लॉक किया गया है। And you are playing very beautifully, but Sachin, right now the time has come to thank you. Again, you have the right answer. ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। He won the Oscar in 1992. His last major movie was आगंतुक 1991. उनकी जो आखिरी फिल्म थी आगंतुक। सत्यजीत रॉय एक बहुत ही मशहूर डायरेक्टर हैं। एक बार अमिताभ बच्चन ने उनको क्रिटिसाइज किया था कि सेल्स द पॉवर्टी ऑफ इंडिया। वो जनरली कॉमन पीपल की टॉक करते थे, तो सामान्य लोगों की जो कठिनाइयां होती थी उनको मूवीज के जरिए दिखाते थे। तो दैट्स व्हाई द फेमस फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन said that he sells the poverty of India. That is a criticism part, right? But he was a very famous director. All right, now the Sachin completed 10 questions. First of all, congratulations to Sachin right now. Right now,
he is clear the A round. Where A round का जो cross था, he completed this A round, and right now he goes for the B round, and he is the first contestant who has gone for B round. बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप confidently, and lucky coincidences never happen without effort. Luck भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करते हैं, क्योंकि अगर मेहनत करने वाले भी हों, अगर उसमें आपकी योग्यता का प्रतिशत ज्यादा हो, तो आप अपने जीवन की दिशा और दशा दोनों परिवर्तित कर अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। तो सचिन, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? You have cleared your first round, A round आपने क्लियर किया है, and beautifully you are playing. You are confident about. कंप्यूटर मास है, रेडी हैं? ओके। तो सचिन और कुछ शेयर करना चाहते हैं? अब आप चाहें तो 50-50 यूज कर सकते हैं ऑप्शन। बाय द वे, यू आर स्टक इन एनी क्वेश्चन, यू कैन यूज 50-50 ऑप्शन। आप 50-50 ऑप्शन को यूज कर सकते हैं कहीं भी। दो गलत जवाब आपको डिलीट कर दिए जाएंगे, एंड यू कैन चूज वन ऑफ देम। और राइट नाउ सचिन, यू वांट टू शेयर समथिंग? कुछ शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ? Yes, sir, I am very happy but nervous. नर्वस, ओके। नर्वस होने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि कॉन्फिडेंस एंड परफेक्शन, इन कॉन्फिडेंस एंड परफेक्शन, परफेक्शन नीड्स ऑलवेज बेस्ट ऑफ द बेस्ट। यस, परफेक्शन नीड्स ऑलवेज बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बट कॉन्फिडेंस मीन्स हाउ यू हैंडल द वर्स्ट सिचुएशन। विषम परिस्थितियों में भी जो उसको हैंडल करके आगे बढ़ते हैं, उनको कॉन्फिडेंट बोलते हैं। और जो परफेक्शन होता है, वो तो बेस्ट एटमॉस्फेयर, बेस्ट कंडीशन में ही वो बेस्ट दे पाते हैं। वी हैव टू हैंडल द वर्स्ट सिचुएशन। इन एवरी सिचुएशन यू हैव टू शो योर टैलेंट। यस, क्योंकि अच्छे के साथ तो अच्छा होता ही है। इन वर्स्ट सिचुएशन इफ यू शो योर टैलेंट, then you show that you are the best. My next question from the Sachin. Name the god that migrates from North Pole to the South Pole and back. A. Arctic tern, B. swallow, C. crane and D. penguin. इस बर्ड का नाम बताइए जो एक स्थान से नॉर्थ पोल, उत्तर पोल से दक्षिण पोल को माइग्रेट करता है, बदलता है। Arctic tern, swallow, crane and penguin. Your time starts now. First, जैसे गर्मियों या जाड़े के सीजन आते हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान में झुंड के झुंड जो है वो माइग्रेट करके चले जाते हैं। अगर आपको इस बारे में कोई आइडिया हो, if you want to use your lifeline, 50-50 is available for you. You can use this lifeline. इस lifeline का भी यूज कर सकते हैं। Running in your mind, Sachin? Option A. Option A, acting tongue. कहीं पढ़ा है आपने? No, sir. आपने पढ़ा नहीं? It was guessing. Confusion हो सकता है if you want to use your 50-50 lifeline. If you are confident, according to as I suggest to all the contestants, if you are confident, I can lock. If you are not confident, then you want to lock it? कंप्यूटर माउस है, ऑप्शन ए को लॉक किया गया। और सचिन, आप बहुत अच्छा खेल रहे थे, आपने ऑप्शन ए को चुना, एंड दैट्स द राइट आंसर। यू आर प्लेइंग वेरी गुड, यू हैव चूज द राइट ऑप्शन, वेरी गुड। पक्षियां जो है एक स्थान से दूसरे स्थान माइग्रेट करते हैं। कई ऐसे प्लेसेस हैं, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, जैसे अकॉर्डिंग टू देयर सीजन दे माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, एंड दैट इज कॉल्ड द माइग्रेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द Sachin. Sachin is on the hot seat. Which animal is the main attraction of Assam Kaziranga National Park? Option A, zebra. Option B, the one-horned rhinoceros. Option C, lion. And option D, giraffe. इनमें से कौन सा जानवर जो है असम काजीरंगा नेशनल पार्क का अट्रैक्शन केंद्र, आकर्षण का केंद्र है? जेब्रा,
या एक सिंग वाला राइनोसोरस, शेर या जिराफ, लंबी गर्दन वाला जिराफ? Your time starts now. हमारे साथ हॉट सीट पे सचिन कुमार बैठे हुए हैं. Is very inspired from Sachin Tendulkar and is playing very good. इन्होंने एक पड़ाव पार कर लिया है, सेट ए क्रॉस कर लिया है और बहुत अच्छा खेल रहे हैं. हमारी शुभकामनाएं के साथ हैं. Let's see what the result. What's running in your mind, Sachin? क्या चल रहा है आपके माइंड? Lifeline. Now time stop. Right now, Sachin want to use lifeline. Very good decision you have taken. If you are not clear about the picture, definitely you must use the lifeline because it is for your recognition. And right now, the 50-50 option use computer master. दो गलत जवाब डिलीट किए. Two wrong answers. You can delete. वैसे आपका confusion हो. Right now, two wrong answers deleted. Option the one on Rhinoceros and option D giraffe. क्या लगता है? जिराफ लगता है? Are you sure? ऐसा आपका ये ब्लॉक कर देता है. Option? You have changed your option? आपने अभी जिराफ कहा था, आप ऑप्शन बदलना चाहते हैं? The one on Rhinoceros ऑप्शन चेंज करना चाहते हैं? Are you sure? Confident? नहीं, otherwise after freezing up change नहीं कर सकते. कंप्यूटर मास्टर ऑप्शन भी गलत किया गया. सचिन, अगर आपने जिराफ कहा होता तो आपका यह जवाब गलत होता. The right answer is one on Rhinoceros. In the last moment, he has changed his decision. Otherwise, he is going to lose this winner seat. Last moment में इन्होंने निर्णय. Sometimes when you take the decision in the last moment, it is beneficial for your whole life. कभी-कभी अंतिम क्षण में लिए गए निर्णय आपके जीवन के लिए काफी फ्रूटफुल होते हैं. My next question from ऐश्वर्या हमारे साथ हॉट सीट पे हैं. सचिन कुमार. सचिन कुमार बहुत अच्छा खेल रहे हैं. सेट पड़ाव ए उन्होंने क्रॉस कर लिया है. पड़ाव बी में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उन्होंने? Yes. Set B, question number 2. Sangamitra is counting your scoring, what score you are getting, what points you are getting. According to that, you will get certificate and trophy. Okay. So right now, Sachin, are you ready for the question? Before asking the question, I want to ask you that. Tell me that. You have an interest in Miss Universe, Miss India like this. कभी देखा है आपने इस तरह के programs होते हुए? Yes, sir. Yes. Mathematics में इसका कहाँ use करते हैं? सेंट्रल डेरिवेशन आपको पढ़ाया गया होगा क्लास 8 में. मैथमेटिक्स में क्या इसका कोई यूज है जो हम मिस यूनिवर्स या मिस इंडिया के प्रोग्राम में करते हैं कि सेट इन द सीक्वेंस टू ऑल द कंटेस्टेंट? मीडियन का यूज करते हैं. मीडियन मोड एंड द मीडियन इज यूज्ड. तो सचिन, आई एम आस्किंग यू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऐश्वर्या राय वाज क्राउन्ड मिस वर्ल्ड इन व्हिच ईयर? ऐश्वर्या राय को किस वर्ष मिस वर्ल्ड का ताज मिला? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1994 एंड ऑप्शन डी 1995. Your time starts now. जानते हैं ऐश्वर्या राय के बारे में? सुना है? कभी कोई मूवी देखी है क्या आपने? आप मूवी को देखना पसंद नहीं है. अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं. Don't have any lifeline. You cannot use it. So you have to take your own decision and you have to stick with that because you cannot help right now. Option B 1993.
हम इसको फ्रीज करते हैं। Yes. कंप्यूटर कहां से है? 1993 को लॉक किया जाए। सचिन आप बहुत अच्छा खेल रहे थे, but ये गलत जवाब है। The right answer is 1994. In 1994, Aishwarya Rai was crowned Miss World. Miss World. Person on the right seat. Yes, the most deserving candidate till now. He has shown his confidence and guts. Thanks very much.